हेलो ऑल। सो इन आवर सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर प्लेम्स 2021 जो हमने फर्स्ट थीम ली थी दैट इज प्लेसेस इन न्यूज़, उसका आज सेकंड वीडियो है। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस फ्रॉम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। इन दिस सेशन विल बी टेकिंग फ्यू लोकेशंस फ्रॉम इंडिया एंड फ्यू लोकेशंस फ्रॉम वर्ल्ड। ऑल्सो जो लास्ट वीडियो का एक अपडेट है दैट द ब्लॉकेज वी डिस्कस इन सुएज कैनाल हैज़ नाउ बिन रिजॉल्व। उसमें जो एवर गिवन शिप ऑफ एवर ग्रीन कंपनी फंसा हुआ था has now been resolved with the help of tugboats and also with the help of full moon, because in the full moon night high tide waves were prevalent in the area, as a result of which it increased the water level, which was helpful in deblocking the ship from the Suez Canal. So let's start from the second video in the series of places in news. So this is our video second in the series of places in news. The first entry which we'll be taking today is Daulat Beg Oldie. It's a very unique kind of word, but it was recently in news due to the ongoing standoff along the line of actual control between India and China. The Darbuk Shok Diebo means Daulat Beg Oldie road was often seen in news. ठीक है, तो अभी रिसेंट स्टैंड अप हो रहा है अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसके अंदर बहुत बार दरबुक श्योक एंड दौलत बेग रोड का नाम न्यूज़ में आया है। अब हम देखते हैं ये कहाँ पर लोकेटेड है मैप पे। सो वी टॉक अबाउट दिस इज़ लद्दाख एंड दिस इज़ ले। फ्रॉम ले टूवर्ड सदर्न पार्ट lies the Darbuk area, and when you go from Darbuk to Shiok, it is at an altitude of 14,000 feet, and Shiok we all know is the last village of India. So this can be termed as the last village in the Indian region or of the Indian region. Now if you talk about when you will go from this Shiok to the Karakoram Pass, you will find what DBO in between, that is Daulat Beg Oldie in between from Shiok to Karakoram Pass. So let's suppose you are going now from Shiok towards the Karakoram Pass, so you'll be getting what DBO there, Daulat Beg Oldie, and this road is termed as द डरबुक शॉक दौलत बेग रोड। अब अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो दिस लोकेशन वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस DBO इज़ अ प्लेट्यू and it is at the height of 16,000 feet. It is also important because it is a location of advanced landing ground for Indian Air Force to drop the essential supplies to the army. तो ये इसलिए भी important है प्लेट्यू. Also it is very strategically important because it lies very near to this LAC and it is just around 9 kilometers from this LAC. So this is also important from exam perspective. अब अगर other points की बात करें इसके अंदर, so what are other points is this DBO is India's northernmost corner. It is considered as India's southernmost corner. It is located 9 kilometers away from the LAC. So this is LAC which is going on. Also, the construction of DSDBO, that is Darbuk Shiok Daulat Beg Road, was started in 2000 and got completed in 2012. Also recently, Rajnath Singh Minister inaugurated this Colonel Chewang Rinchen Bridge on this DBO road, and what it does is it joins this Darbuk with DBO. ठीक है, तो यहाँ पर this was a bridge which was being inaugurated recently by Minister Rajnath Singh. So I guess everything is clear regarding this Daulat Beg road because it is strategically very important and it was very much in news in the recent times. The second entry is Dobra Chanti Bridge. So the Dobra Chanti Bridge was recently inaugurated by the Chief Minister of Uttarakhand. So what are the important points you need to know is that this is a 440 meter long, India's longest motorable, mind it, India's longest motorable single lane suspension bridge. So it was being inaugurated by the Chief Minister of Uttarakhand. Now where this bridge is located in Uttarakhand, it is located in the Tehri district. So it is located in the Tehri district of Uttarakhand, and in Tehri district it is located or built over
our Tehri Lake. Built over Tehri Lake. And what is Tehri Lake? Tehri Lake is Asia's largest man-made lake. And how it was formed? It was formed due to the creation of Tehri Dam. So Tehri Dam के creation के लिए reservoir के form में Tehri Lake बनाई गई थी, and it is Asia's largest man-made lake. ठीक है. Now some important points about Tehri Dam is that this Tehri Dam is the tallest dam in India. Tallest dam in India. It is built on Bhagirathi River. It is a multi-purpose rock and earth fill embankment dam. Other important thing is, we all know that many times environmental impact assessment has been done on this dam, and it has been time and again been told that it is very much wrongly built dam because it is being built in a tectonically active region of the country. Tectonically active region of the country, because it is comes under zone 4 of the seismic regions. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया, सो दैट यू कैन यूज दिस एज अ केस स्टडी इन योर आंसर्स इन मेन्स, बट नाउ वी विल फोकसिंग ओनली ऑन द प्रीलिम्स पार्ट. थर्ड मैप एंट्री इज Assumption Island. अब Assumption Island क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज रिसेंटली इंडिया एंड सेशल्स डिस्कस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन on the Assumption Island when Minister of External Affairs S. Jaishankar was on a visit to the region. Now, the important point are that India signed a pact to develop the naval facility on Assumption Island. So now there will be a naval facility on Assumption Island of India. Also, what was the aim to go to such small island? It was the primarily aim was to establish early contact with the new government which came into power in Seychelles recently after the presidential polls. ठीक है, तो ये important चीज़ है. Also, an important geographical aspect to know about this Assumption Island is that it is a coral island, and the population is very less on this island, less than 20 people. So these are the important things about Assumption Island and where it is located. And we are planning to develop a naval facility in this location. Now, point 4 is Mount Everest. Why I have included is because recently China and Nepal. So we know that China and Nepal are forming the boundary, or their boundary crosses across the Mount Everest, jointly announced new height of the Mount Everest, and this height is 8848.86 meter. That is, it is now 0.86 meter higher than the previous height, and in feet it is 2.8 feet than the previous estimate. Now, if you talk about an important fact regarding the height of the mountain, these are that the 3 of the tallest mountains on earth, depends upon the way we are measuring them. Because example, if we are measuring the tallest mountain from sea level, this is sea level. So the tallest mountain from sea level is no doubt our Mount Everest. But if we are measuring the height of the mountain from the seabed, then Mauna Kea in the Hawaii Islands is the tallest mountain of the earth. But if we are measuring the mountain from the equator perspective, because we know that there is a significant bulge from the equator, and from there, from the equator bulge, the tallest mountain is Mount Chimborazo, and this is also closest to the sun. So it was an interesting fact you need to know. Similarly, the other peaks in the region was K2, which is also called as Godwin Austen, also lies in this area. Okay, so the countries which are sharing the K2 range is India, China, and the parts of POK. Then Kanchenjunga is primarily between Nepal and India. Then Lhotse is between Nepal and China, and Makalu is between Nepal and China. So in the exam, it can be asked that where this mountain ranges actually belongs.
ठीक है. At the same time, what we can infer about this increasing height of Mount Everest is that Mount Everest or Himalayas are young fold mountains. Young fold mountains, which means that their height is increasing on a continuous basis. ठीक है. They are tectonically more active and their height is increasing. So when two plates converge, this is certain deformation of the crust happens and this thing happens, which we'll discuss in depth in our geography portion. Now the other important thing is कि there are two routes. There are two routes to summit what? Mount Everest. One is the south east ridge route, and this southeast ridge route is from Nepal. ठीक है, which is being preferred by most of the hikers during the climbing or summiting of the Mount Everest season. While there is a northern ridge part or route as well, from which climbing also happen, but it is more riskier route, and this route is from Tibet. So this is another important fact about Mount Everest. The next entry is Mount Girnar. So Mount Girnar is in Junagadh, and Junagadh is in Gujarat state of the country. So here there is our Junagadh, and this is the range of Mount Girnar. Why it was in news? Because recently Prime Minister Modi inaugurated the Girnar ropeway project in the Junagadh. Now, other important historical and cultural aspects of Girnar forest are that many holy places are associated with Jainism. Even the famous Jain temples of Neminath, which is the largest Jain temple in this area, was present there, and it was being built under the 12th century under the rule of Chalukya dynasty. So this is also important historically. Historical perspective भी है इस place के साथ. So that you also need to know. Now another thing is Gilgit Baltistan region. अब ये क्यों important है? Because recently Pakistan is planning to accord a provincial status to the region. अब इसके अंदर बहुत controversy involved हो गई है. So it is important region. अब इसके बारे में हम बात करते हैं. Why it is strategically so important? Because it gives a land access to China. Also, it is very resourceful rich region, specifically in terms of water, because many glaciers are present in this region. At the same time, our CPEC corridor, that is China-Pakistan Economic Corridor, passes through it, and then later to the Kashgar Valley, which is being acceded to China by Pakistan. अब इसके अंदर अगर important बात करें हम, तो there are various important things we need to remember about Gilgit-Baltistan region, and that is that India's stand on this region is India consider it as a part of UT of Ladakh. ठीक है, तो India what it says is that it is nothing. Gilgit-Baltistan region is a part of UT of Ladakh. However, Pakistan views it as a region which is separate from POK. It does not consider it a disputed area. It takes it a view of separation from POK. उसको एक separate part मानता है POK से. Because we all know that this Gilgit-Baltistan region is also called as POK. That is Kashmir occupied by Pakistan. That is Pakistan occupied Kashmir. तो इसको एक separate region की तरह view करता है Pakistan, and therefore it is planning to accord a provincial status to this region. But India is saying it as a part of Ladakh. अब कुछ story है इसके पीछे, वो story फटाफट से सुन लेते हैं. Story क्या थी? Story was this कि 1947 के अंदर there was a British army officer of the rank of colonel. ठीक है, वो colonel rank का British army officer था, who gave or acceded this region to Pakistan when the governor of the then Jammu and Kashmir, that is Maharaja Hari Singh, was under imprisoned. तो उसको क्या है, Maharaja Hari Singh was under prison, and in that time British army officer who was of the rank of the colonel acceded this place to Pakistan. But at the same time, India's view is, India says that it is an integral part of the country along with Kashmir and Ladakh. At the same time, India is saying that by the virtue of legal and completely irrevocable instrument of accession of Jammu and Kashmir was being signed by the Union of India in 1947 by the then Maharaja Hari Singh of the area. तो ये इंडिया का स्टैंड है और ये पाकिस्तान का स्टैंड है, एंड देयरफॉर पाकिस्तान व्यूज इट एज अ
region separate from POK, and therefore it is now planning to give it a provincial status, which has been controversially seen. Now the next is Sambar Lake. अब Sambar Lake न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज 2090 के अंदर मोर देन 20,000 माइग्रेटरी बर्ड्स विच केम फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है, वर डाइड ड्यू टू एवियन बॉटुलिज्म. अब एवियन बॉटुलिज्म क्या होता है वो हम देखते हैं. बट अभी रिसेंटली एक और 2021 के अंदर एक और 2020 के अंदर एक और क्या आया, राजस्थान गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया दैट राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड टू बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स बिकॉज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म वॉज बीन गिवन टू द राजस्थान गवर्नमेंट एंड देयरफॉर दे प्लान टू बिल्ड टेम्पररी शेल्टर फॉर दीज माइग्रेटरी बर्ड्स व्हेन दे कम टू इंडिया. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड. इनलैंड का मतलब इट इज़ इनसाइड द लैंड, लैंडलॉक्ड है. इनलैंड सलाइन वाटर बॉडी. It is surrounded by Aravali's from almost all sides and spread across 3 districts, and these 3 districts are Nagaur, Ajmer and Jaipur. So this is our Sambar Lake. It is also an important Ramsar site which was being given the title in 1990. At the same time it is an important bird area. अब हम बात करते हैं एवियन बॉटुलिज्म की बिकॉज इट कैन ऑल्सो कम एज अ सेपरेट MCQ. अब एवियन बॉटुलिज्म क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अ न्यूरो मस्कुलर illness. It is a neuromuscular illness. What it happens or does is it affects the nervous system. It affects the nervous system of birds and paralyzes their legs and wings, and therefore birds could not able to fly once they drink water of this infected lake, as a result of which they die at that same place, and therefore 20,000 caracas of these migratory birds were being discovered or seen in the year 2019, late 2019. अब एवियन बॉटुलिज्म किस लिए होता है? इज नथिंग बट अ botulinum which is nothing but a natural toxin. ये नेचुरल टॉक्सिन होता है एंड इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया का नाम क्या है? दिस बैक्टीरिया इज क्लॉस्ट्रोडियम बोटुलिनम. ठीक है, क्लॉस्ट्रोडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया मिलता है एंड दिस बैक्टीरिया यूजुअली ग्रोज इन एनारोबिक कंडीशंस. And it is commonly found in soil, rivers, sea water, etc. But at this particular place, it was grown in a larger quantity and therefore affected in a larger scale. 8th map entry is Bhagjan of oil fields. So we all know that Bhagjan oil fields are in Assam. Recently, an oil fire took place here. Government has taken several measures to address the issues of such oil fields. Example, in 2009, government constituted an MB Lal committee following the fire accident at the IOCL terminal in Jaipur to address the oil field fire issues. So you don't need to remember much things. You just need to remember that Bhagjan oil fields are in Assam and recently a fire took place there. The 9th entry is Sukhna Lake. Now Sukhna Lake, what are important things is that it is a rain-fed lake. That is, it is mostly seasonal and located in Chandigarh. Recently, Punjab and Haryana, because Chandigarh is under jurisdiction of both high courts, so declared it as a living entity and declared all citizens of Chandigarh as their parents who need to look after it to save the lake from extinction. ठीक है, तो Sukhna Lake is being designated as a living entity. Now, man-made Sukhna Lake was built in 1941 by Lee Corbusier, the architect of Chandigarh we know as famously, and it is located at foothills of Shivaliks. It has also has a nearby Sukhna Wildlife Sanctuary that is home to various important biodiversity aspects. Now, there is another important related information in this aspect is that New Zealand was the first in the world to declare Hang Ganui River as a person having living status. So, this all chaos was started from New Zealand, where New Zealand first declared this Hang Ganui River as a person having living status. Then, following this jurisdiction, in 2017, Uttarakhand High Court also accorded Ganga and Yamuna as living entities, which was later been reversed by the Supreme Court or stayed by the Supreme Court, because there were many things, because it cannot be taken on a state to state basis, because Ganga and Yamuna traverses to many states and therefore most collaboration and stakeholder approach cannot be taken on this. Similarly, in 2019, Punjab and Haryana court accorded the status of legal person or entity to animals in Haryana.
So these are the important timelines of according this living status or living entities to non-living things, which started from New Zealand in the first instance, and this the latest entrant in this is the Sukna Lake in Chandigarh. The next entry is Nandur Madhameshwar. So Nandur Madhameshwar was important because it is the first Ramsar site in Maharashtra. ठीक है, आज अभी तक कोई रामसर की साइट नहीं थी महाराष्ट्र में. देयर वर वेटलैंड्स, बट वेटलैंड्स अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन वाज नॉट प्रेजेंट. सो रिसेंटली in 2020, first Ramsar site was Nandur Madhameshwar, which was in Maharashtra, which is located on the confluence of Godavari and Kadwa rivers. Now it provides sanctuary to critically endangered species including Deolali minnow, a fish, Indian vulture, and white-rumped vulture. Now this Deolali minnow fish is why important, because currently only known from the Darna river. ठीक है, it is currently only found in the Darna river near Deolali in the Nasik district of Maharashtra. It is possibly extinct as it has not been recorded since 2004. So therefore also it was being pushed that this particular area should be made as a Ramsar wetland site. Now moving on to some international places which were left in the last video. We have 4-5 places in news. That is, first is Nagorno-Karabakh region. Now why it is important, because recently what happened was, territorial disputes and ethnic conflict between Armenia and Azerbaijan over it erupted again. ठीक है, तो वापस क्या है कि बहुत न्यूज़ में था. अब अगर हम देखें तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, इट इज़ अ लैंडलॉक्ड रीजन. फर्स्ट थिंग, इन द साउथ कैकोसस हिल रेंज विद इन द माउंटेन रेंज ऑफ कराबाक. सो इसकी जो क्लोजेस्ट माउंटेन रेंज आती है वो कौन सी है? कराबाक, एंड देयरफॉर द नेम नागोर्नो कराबाक रीजन. अब इसके अंदर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो अब इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनली दिस रीजन इज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान. ठीक है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज it is mostly governed by an independent state. It is mostly governed by an independent state which is called as Artsakh. ठीक है, which is termed as Artsakh. ठीक है, Republic of Artsakh, which is a de facto independent state of the region. ठीक है, so that is not belonging to Azerbaijan and it is neither belonging to Armenia, which lies somewhere in this region. ठीक है, that is Republic of Artsakh, which is an independent state within the Armenia. ठीक है, अब क्या है ना, ये यहाँ पर लाई कर रहा है. इंटरनेशनली इसको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? वो ग्लोबल कम्युनिटी इसको रिकॉग्नाइज कर रही है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, कि ये पर्टिकुलर किसका है? अजरबैजान का है. मगर यहाँ पर कौन से डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट रहे हैं? रिपब्लिक ऑफ अर्त्सक. और अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसके अंदर मेजॉरिटी है वो किसकी है? आर्मेनियन एथनिसिटी की. आर्मेनियन एथनिसिटी की मेजॉरिटी है. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज़ बीन बैक्ड बाय आर्मेनिया एज अ नेबर. ठीक है, इस एथनिसिटी को बैक करते हैं एंड देयरफॉर दिस एथनिसिटी इज ऑल्सो बैकिंग टूवर्ड्स इट एंड इट्स ट्राइंग टू fetch or clinch this portion from Azerbaijan, and therefore recent conflicts erupted again between those two countries. ठीक है, तो समझ में आ गया. इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है इसको? अजरबैजान का पार्ट कर रहे हैं. बट ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंट डिफेक्टो स्टेट बना हुआ है, दैट इज रिपब्लिक ऑफ अर्त्सक. ठीक है, विच डज नॉट कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ आइदर अजरबैजान नॉर आर्मेनिया. मगर ये जो रीजन है डोमिनेटेड किसके द्वारा है? ऑफ आर्मेनियन एथनिसिटी, एंड देयरफॉर आर्मेनिया इज ट्राइंग टू capture this part with the help of Armenian ethnicity by taking control over the Republic of Artsakh, and therefore Azerbaijan was also came into the conflict. The second is Kilau volcano. Why? Because it was recently erupted. Volcano तो न्यूज़ में तभी आता है जब erupt होते हैं recently. Now it is an active shield volcano. We will be looking at what is active shield volcano in a minute. And in the Hawaiian island. So here is our Kilau volcano which was erupted recently. Also in the next slide we have taken Sinabung volcano which is in Indonesia, which also erupted recently. So it was created as a Pacific tectonic plate moved over the Hawaiian hotspot. ठीक है, तो दो टाइप से वॉल्केनो बनते हैं, आइदर
2 plates are converging towards each other and the denser plates submerging and melting, and this melted mantle will give a hydraulic force on this plate and therefore will erupt what? Our volcanoes. So this is something happening in the majorly in the lithospheric portion only, but or asthenos combining with the asthenos lithospheric plates हो गई हमारे पास combining with the asthenosphere region, ठीक है. बट जो हॉटस्पॉट वॉल्केनोज हैं, हॉटस्पॉट वॉल्केनोज कैसे होते हैं कि ये हमारी कोर हो गई, ठीक है, और ये हमारी आउटर कोर हो गई, ये हमारा इनर मेंटल हो गया, ठीक है, ये हमारा अपर मेंटल हो गया, ठीक है. उसके बाद हमारे ओशनिक क्रस्ट, फिर हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो होता क्या है कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑन द बाउंड्री ऑफ इनर मेंटल एंड आउटर कोर देयर आर सर्टेन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर इंटेंसिटी. और यहाँ पर जो रीजन्स होते हैं इनको हम क्या है कि हॉटस्पॉट्स बुलाते हैं. और यहाँ से क्या होता है, मेंटल प्लूम्स इमर्ज होते हैं यहाँ से, एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग वॉट वॉल्केनिक आइलैंड्स लाइक दिस. सो दिस हवाइन आइलैंड इज नथिंग बट अ हॉटस्पॉट आइलैंड, ठीक है. तो हॉटस्पॉट ये होते हैं, ठीक है. दीज आर हॉटस्पॉट वॉल्केनोज, ठीक है, एंड दीज आर नॉर्मल वॉल्केनोज. सो दोनों का प्रोसेस अलग है बनने का, ठीक है. ये क्लियर हो गई बात. मेंटल प्लूम्स निकलते हैं कहाँ से, यहाँ से डायरेक्टली. ये क्या होता है, यहाँ पर जो प्लेट होती है जैसे सबडक्ट होती है, सबमर्ज होती है, ड्यू टू हीट ऑफ दिस रीजन स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड द मेल्टिंग मैग्मा पुट्स अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑन दिस अपर प्लेट एंड देयरफॉर इट इरप्ट्स. ये केस है हमारा हिमालयस के इनसाइड में, ठीक है, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के केस में, ये सारा केस है. बट हवाइन आइलैंड कैसा है, हॉटस्पॉट डेवलप्ड है, ठीक है. हवाइन आइलैंड इज एसेंशियली नथिंग बट अ वॉल्केनिक आइलैंड, एंड ओवर दिस हवाइन आइलैंड दिस किलाउ वॉल्केनो वॉज इरप्टेड रिसेंटली. अभी कैसा था, इट वॉज एन एक्टिव शील्ड वॉल्केनो. अब शील्ड वॉल्केनो कैसे होते हैं, इट सीम्स टू लाइक अ शील्ड ऑफ अ वॉरियर, जिसको ग्राउंड पे ऐसे रख रखा हो. जो वॉरियर की शील्ड होती है ऐसे ऐसे इसको रख रखा हो, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है, वाई दिस शील्ड वॉल्केनोज फॉर्म्स लाइक दिस, बिकॉज जो इसमें मैग्मा निकलता है, ठीक है. और मैग्मा यहाँ तक हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, ठीक है. जैसे ही इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस इट इज़ टर्म्ड एज लावा, ठीक है. तो जो लावा होता है यहाँ पे, ये इसकी जो विस्कोसिटी होती है बहुत कम होती है. इसकी विस्कोसिटी कम होती है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, इसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. इट इज़ हाईली फ्लूइड और देयरफॉर इट ट्रेवल्स एट अ फार्दर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ओपनिंग. और जब दूर डिस्टेंस पे जाता है तो इसकी हाइट क्या है कि ज़्यादा नहीं होती है, हाइट इज़ स्मॉल एंड देयरफॉर इट लुक्स लाइक अ शील्ड ऑफ अ वॉरियर सिटिंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड. तो ये शील्ड वॉल्केनोज की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज देयर विस्कोसिटी इज लो एंड देयरफॉर देयर फ्लूइडिटी इज हाई. और विस्कोसिटी को कौन कंट्रोल करता है, इफ़ यू लुक और रीड द 11th एंड 12th NCERTs, विस्कोसिटी कनेक्ट करता है या कंट्रोल करता है द वॉल्यूम ऑफ सिलिका. अगर सिलिका ज़्यादा होगा तो मैग्मा या लावा कैसा होगा हमारा, ज़्यादा एसिडिक होगा, और एसिडिक ज़्यादा होगा तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. और विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू रेजिस्ट, ठीक है. अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो मान लो कोई फ्लूइड की आपने यहाँ पर ड्रॉप डाली तो इट विल वॉन्ट मूव मच, ठीक है, यहीं कहीं पड़ी रहेगी. अगर विस्कोसिटी कम होगी तो कोई आपने यहाँ ड्रॉप डाली तो इट कैन ट्रेवल टू फार्दर डिस्टेंसेस, ठीक है. सिमिलरली माउंट सिनाबॉग मैंने बताया इंडोनेशिया में था. यू हैव ऑलरेडी सीन द लोकेशन, इट इज़ हेयर. इट इरप्टेड रिसेंटली एंड सेंट अ कॉलम ऑफ एश एंड स्मोक to a height of 16,000 feet into the air and it changed the local atmosphere of that particular region. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं याद रखने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ यही हैं दैट इट इज़ ऑन द नदर्न सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया. इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट, विच वॉज अ क्वेश्चन इन मेन्स 2020 इन जोग्राफी पेपर विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. अब अगर इसकी बात करूँ तो रिंग ऑफ फायर, ठीक है, जो क्वेश्चन आया था. अब रिंग ऑफ फायर क्या है, इसको ऑल्सो बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं इसको. एट द सेम टाइम इट इज़ अ शेप इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स शू शेप है अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन की, ठीक है. तो इट सीम्स लाइक अ हॉर्स शू शेप्ड ओशन, ठीक है. और इसके यहाँ पर जो पेरीफेरी है इसके ऑल लॉन्ग क्या लाई करता है, दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. और यहाँ पर कहीं क्या है कि जापान है हमारा, विच इज़ लोकेटेड ऑन आइलैंड आर्क्स फॉर्म इन दीज रीजन्स, ठीक है. एंड दिस पैसिफिक
ring of fire or circum-Pacific belt is a part or forms the part of 75% of volcanoes, ठीक है, and 90% of earthquakes of the world, ठीक है. तो अप्रॉक्सीमेटली 75% वॉल्केनोज और 90% ऑफ अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर क्या है कि हमें ऑब्जर्व होते हैं. नाउ द फोर्थ एस्पेक्ट इज बेरूत, ठीक है. बेरूत का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पे, ठीक है, विच डिवास्टेटेड द पोर्ट सिटी और पोर्ट एरिया ऑफ द कैपिटल बेरूत ऑफ लेबनन, ठीक है. तो कॉज क्या था यहाँ पर? कॉज वॉज देर वॉज अ अनसेफ स्टोरेज ऑफ 2750 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. तो केमिकल है, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम. अब अगर बात करें बेरूत का लाई करते हैं, सो बेरूत लाइज, ठीक है, रफली एट द मिड पॉइंट ऑफ द मेडिटेरियन कोस्ट, ठीक है. तो ये मेडिटेरियन कोस्ट है इसका, बेरूत लेबनान का, और लेबनान के मेडिटेरियन कोस्ट के रफली मिड पॉइंट में लाई करता है. एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी, कैपिटल ऑफ लेबनान. दैट इज़ ऑल. लास्ट क्या है? लास्ट इज Tristan de Cunha. I don't know if I am pronouncing it right or not, but it was also in news primarily because it was declared as the largest fully protected marine reserve in the Atlantic Ocean. ठीक है, it was being declared as the largest fully protected marine reserve in the Atlantic Ocean. ये इसकी लोकेशन है साउथ अटलांटिक में, ठीक है, विच इज़ रफली अराउंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम केप टाउन इन अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, एंड दिस रियो de Janeiro in Brazil. So it is inhabited by less than 300 people, ठीक है, एंड अ स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड्स ओवर 600 माइल्स फ्रॉम द, जो अलग अलग लोकेशंस दे रखी हैं. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस मच, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो एन आइसोलेटेड यूके ओवरसीज टेरिटरी, ठीक है. दिस particular island is belonging to UK overseas territory and is a remote group of volcanic island, ठीक है. It is also volcanic in nature in the South Atlantic Ocean. अब significance क्या है इस declaration का? The significance is that after joining UK Blue Belt program, under this initiative, after joining UK's Blue Belt program, it will become the largest no-take zone in the Atlantic and fourth largest on the planet. अब इसने बाद जब ये डिक्लेरेशन हो गया है दैट इट इज़ बीन प्रोटेक्टेड मराइन रिजर्व, फुली प्रोटेक्टेड मराइन रिजर्व इन द अटलांटिक ओशन, तो उसके बाद इसको क्या क्या पर्क्स मिलेंगे? इट विल बी अ नो टेक जोन, ठीक है, बाय एनी कंट्री इन द अटलांटिक ओशन एंड फोर्थ लार्जेस्ट ऑन द प्लेनेट, ठीक है. तो बहुत सारी कंट्रीज़ के नेवल शिप्स अगर यहाँ आके नहीं डॉक होंगे देन इट विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इट्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है. सो दिस वॉज essentially our discussion of session 2 in our series of places in news, ठीक है. तो session 2 हो गया. There are 2 more sessions, session 3 and session 4 for places in news only, and after that we will be covering almost all the important relevant places in news for prelims 2021 and in a current affairs format. So if you like the video, do share it with your friends, like the channel, subscribe it, and we'll see what we can complete in the next video. So thank you and have a nice day.